inquiry, quotation, and sales order. So before that, what we can do, we can create our own order types. Okay, so if you go to sales and distribution, go to sales, then here you have order type, go to define sales document types. अब इसमें पोजीशन करेंगे ओ आर ऑर्डर टाइप, एंड ओ आर का हम एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे, एंड वी विल नेम इट एज जी ओ आर, आई थिंक प्रोबेबली बना होगा। हाँ, वो भी क्रिएट करेंगे, दोनों क्रिएट करेंगे। या ओके, सो जी ओ आर इसको मैं कर देता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ जैसे कि एल जी स्टैंडर्ड ऑर्डर, जैसे जो नॉर्मल हमारा ऑर्डर क्रिएट हो रहा है उसको हम जेड एल जी ऑर्डर करके वी आर नेमिंग दिस। ठीक है, तो अभी हमने इसका नाम स्टैंडर्ड ऑर्डर से चेंज कर दिया एल जी ऑर्डर, और इसको हमने जेड ओ आर बना लिया अपना डॉक्यूमेंट। तो इसको हम जेड ओ आर बना सकते हैं, एनी नेम वी कैन गिव, 3 डिजिट की स्टार्टिंग विद जेड और वाई। तो जो भी कस्टमाइजिंग कर रहे हैं वी हैव टू स्टार्ट विद जेड और वाई। तो इसको सेव करेंगे। सो अभी हमारा जी ओ आर ऑर्डर बन गया। अब हम इंक्वायरी और कोटेशन भी बना लेते हैं। तो गो टू इंक्वायरी, एंड फिर यहाँ से सेलेक्ट करके गो टू दिस कॉपी ऑप्शन, और इसको मैं बना लूँगा ZIN, और ये हो गई हमारी LG इंक्वायरी। तो इस तरह से हम मतलब अपना जो भी नेमिंग कन्वेंशन जो भी स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट वी कैन कीप। फिर LG इंक्वायरी हो गई, एंड दैट्स क्रिएट कोटेशन। तो कोटेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, हाय शगुफ्ता। Yeah, so we just started. Hope you can see my screen. Okay, so what we are doing, we are creating a copy of standard order types. So we will not use standard order types, we will use our own customized order types. Okay, so I've created ZOR by copying order type OR, and then we have renamed it as LG standard order. Then we have created ZQT. Okay, ZIN I have created, which is your inquiry, and now I'm creating quotation document. So whenever we are doing any customizing, we have to select the original one and then create a copy of that original one, and its name will start with Z or Y. Okay, so any customizing that we are doing as per standard practice, we have to start the name with Z or Y. So let's name it to LG quotation, and then system will ask whether you want to copy all the details, and then just click on yes. So let me open our document also that I was. Okay, so org structure we have prepared, and now what we are doing, we are creating document types. So I have created ZIN for inquiry, ZQT for quotation, and ZOR for our standard order. Now next step will be to yes, हाँ, हाँ, उसमें हम मतलब सेम रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी चेंजेस, जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर का है ना। हाँ, कौन सा? डिस्प्ले रेंज नहीं, ये तो यूज नहीं होता है। हम्म, हाँ,
हाँ, ये तो मैंने जब ऑर्डर टाइप्स एक्सप्लेन किया था ना, आप वो वाला रिकॉर्डिंग देखना, उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बताए थे। जैसे नंबर रेंजेस के लिए हो गया, रेफरेंस मैंडेटरी, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आउटपुट का, फिर इंक्रीमेंट। तो इसमें फिर जैसे ये एक प्राइसिंग का है, तो उस वाली रिकॉर्डिंग को देखना, उसमें मैंने कई फील्ड्स एक्सप्लेन किए थे। तो इसमें यूजली जो आपको चेंज करना होगा, एक तो नंबर रेंजेस हमें कंट्रोल करनी होती हैं कि इस डॉक्यूमेंट की क्या नंबर रेंज रहेगी। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा कि हमारा जो इंक्रीमेंट होगा, जैसे लाइन आइटम आपका 10 हो गया, तो जो नेक्स्ट लाइन आइटम होगा वो कितने नंबर से इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो बाय स्टैंडर्ड 10 का इंक्रीमेंट होगा। लाइन आइटम जब दूसरा एंटर करोगे तो इट विल बिकम लाइन आइटम 20, लाइन आइटम 30, सो लाइक दैट इट विल इंक्रीमेंट। तो ये भी नॉर्मली सेम रहता है। तो मेनली यू हैव टू, जो आपको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, दैट इज योर नंबर रेंज। बाकी इसमें सेटिंग्स इसमें चेंज नहीं होती हैं। ओके, दिस डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर डूइंग प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे हमें अपनी डिलीवरी टाइप असाइन करनी होती है। जैसे हम डिलीवरी टाइप अभी स्टैंडर्ड LF है, तो हम एक ZLF डिलीवरी बनाएंगे, तो दैट वी विल असाइन हियर इन अवर ZOR। सिमिलरली मान लीजिए हमने और बिलिंग के लिए F2 डॉक्यूमेंट का ZF2 बनाया, तो वो हमें ZF2 फिर यहाँ पे आके असाइन करना पड़ेगा, जो हमारा ZOR ऑर्डर है। सो हाँ, तो ये हम दो तीन फील्ड्स यूज करेंगे। तो दिस फील्ड्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाला, जब आप कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग कर यूज करोगे ना, व्हेन वी आर क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो इन दैट केस इट इट विल बी यूज्ड। तो ऑर्डर में ये यूज नहीं होगा। फिर जैसे यहाँ पे डिलीवरी टाइप बता दिया मैंने आपको, इमीडिएट डिलीवरी वाला इंडिकेटर आएगा, ये एक्टिव होगा जब हम कैश सेल और रश सेल करेंगे। सो दैट टाइम वी विल सी कि उसमें ये हमें एक्टिवेट करना होगा। और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, आपका शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जब आप क्रिएट करोगे ना, उसमें यूज़ होगा इस जैसे आपको अगर याद होगा, तो एग्रीमेंट दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वाले में यूज़ होगा। सो हाँ, इसमें जैसे आपको कोई और फील्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें सेलेक्ट करके प्रेस F1, इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी राइट। जो जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स होंगे वो मैं खुद बताता जाऊंगा। अगर मैं एक एक पे जाऊंगा ना, तो इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, हाँ, तो मेन मेन जो है वो मैंने कवर किए थे। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देखना, जो ऑर्डर टाइप्स वाली मैंने जब हेडर वाला कंप्लीट किया था, दैट डे आई हैव कवर्ड। नहीं, अभी नहीं किया, नॉट येट। ओके। Yeah, partner determination. Have you used account group DB or any other account group? Yeah, that may be one reason, and you can use standard DB also. It's because if you customize, then many thing in FI we need to then change. So try to, when it is related to other modules, just try to go ahead with the standard things. In SD, you can customize. Like here, order types you are customizing. Okay, so when it is interlinked, then issues will come. Or maybe if you were entering BP number or customer number, have you checked that when you are creating order? Because I saw your screenshot. In your screenshot, BP and customer number both were different. Okay, maybe that same. Yeah, so if you are entering customer number, then it's correct. But if you are using BP number in sales order, then system will give you error. So if both numbers are different, then we have to use customer number. Uh, okay, you both VP and okay, then it's fine. Then not problem. Okay, so you have done that configuration to keep both numbers same. Okay, yeah, then it's fine. Okay, so we have created.
GOR GIN GQT. Now next thing, we have to assign this sales document types to our sales area. So first what we will do, we will go to sales. So step by step we have to do this 4 steps. So combine sales organization, here we have to position to our sales organization, and this I already maintained. So this was blank here. I entered LG00. Then distribution channel इसी तरह यहाँ पे already enter रहेगा. We have to just maintain in this column. Here we will maintain Z1 और Z2. So दोनों हमारे यहाँ पे आएंगे. So these two entries actually these were blank. So I have entered this Z1 and Z2. Division इसी तरह हमने यहाँ पे enter कर दिया. So this is we have done. Now the next step is important one. In assign sales document types for this sales area. तो यहाँ पे हमें अपना sales we have to enter our sales organization. So if you see here, uh, I assigned our sales area to inquiry, quotation, order, okay, scheduling agreement, to different documents I assigned this. And so this was already in place. So then when I copied using the standard inquiry, system has already create done one entry with ZIN here. ओके, तो हमें फिर से नहीं करना पड़ा, बिकॉज व्हेन वी आर कॉपीइंग सिस्टम आस्क्ड, उसने प्रॉम्प्ट में पूछा था वेदर वी वांट टू कॉपी ऑल द बैक एंड डिटेल्स, copy controls and other details. So I clicked on yes. So system has copied here. So ZIN, ZOR, ZQT, these are already here. Okay, so let's say if this is not copied due to any reason, or when you are creating a order type by copying, you clicked on you did not copied all the information, you selected the other option, then हमें यहाँ पे मैन्युअली आके ये डालना पड़ेगा. So what we will do, we will go to new entries and then enter our sales area and the document type that we have created. We will assign our sales document to sales area. So now we have created our document types. Now let's try to create one inquiry. So inquiry transaction is VA11, and you can also go from menu path. Okay, from logistics, sales, and here inquiry quotation order. So I'm going with transaction code VA11. So this is my inquiry creation screen. Here you have different options: create with reference, sales, ordering party. So usually these are all the standard options. It will be available. You will see in all the sales document creation screens. So usually inquiry is the first document when we create, when we start with the order to cash process. तो इसमें हम अपना ZIN inquiry डालेंगे. Inquiry type we have to enter here, and then this our sales area we will enter here. Okay, sales office and sales group, these are optional whether you want to maintain it or you don't want to. So we can uh, just proceed. Now press enter. So after entering these details in the main screen, press enter. Now we have to create sold to party and ship to party in our sales area. So in through BP transaction, we will create that. So there are already some created ones. So let's say I'm using this customer. So ship to party and sold to both are same. Let's say my email dated 28 September. So आज की डेट में ये इंक्वायरी आई है, तो जस्ट इन रेफरेंस आई हैव कैप्चर्ड सम इंफॉर्मेशन दैट ईमेल डेटेड today's date. If there is any other information I want to capture, that also I can enter here for my own reference. Now material we will enter here. So let's say हमारा material
This is one, this is television material. If you see description, this is my LG 40-inch television. So now here you have different tabs on the top, you can see here. So we can switch from one tab to another tab, and it will give me uh, more specific information when we go to that particular tab. So let's say if I go to sales, it will give me all the information in this in this view material, and then you have order quantity. If I go to item overview, it will give me more, uh, your screen layout will change and it will give more items related information, item detail. So different tabs are there. There we can see details. Now let's say this is my item order quantity and this is the television description. So जैसे कि दो क्वांटिटीज का हमारे पास इंक्वायरी आया है, and this customer material field, if we have maintained customer material master data, then this field will pop up. Now item category system has automatically determined AFN. So AFN is my item category for inquiry, and then here currency is euro. Now let's see the incompletion log. So so this is the inquiry that we have captured. In inquiry, we can save it with zero price. We because this is we are just capturing the inquiry received from system from the customer. So maybe there can be multiple materials. Okay, so for now I'm just entering same material multiple times, but there will be different materials. Different materials will be there can be multiple lines. Different materials can be ordered in one inquiry or inquired in one inquiry. So ये आ जाएगा. Then you can go to sales view, and sales view में आके we can see this information. So, okay, so here you can see some other details are also showing your payment term, Incoterms, and okay, so then okay, now go to incompletion log and then save it. So my inquiry, LG inquiry is created, and this is my inquiry number. So let me make a note of this. तो हमने एक इंक्वायरी बना दिया. This is my inquiry number. And now, once this is entered, then we have to send quotation to customer because that is the next step. So we will go to VA21. In VA21, we will enter ZQT, which is our customized quotation type. And here we will use create with reference. So we want to create quotation with reference to inquiry that we have created. तो यहाँ पे इंक्वायरी नंबर एंटर कर देंगे. यहाँ पे वी हैव सेलेक्टेड कोटेशन इंक्वायरी ऑप्शन. सो इंक्वायरी के रेफरेंस में हम कोटेशन बना रहे हैं. एंड देन जस्ट कॉपी, and here PR00 is missing. Okay, so I'll come to this. So if you see in the entire information is copied from your quotation to from your inquiry to quotation. So yeah, PR00. Yeah, I'll show you how to fix this. So then once you have entered this, so here you can see my material numbers, material is copied, quantity is copied, every details are copied from your inquiry. And here if you notice, item category has changed. So like document types are changing, here item categories are also changing. There it was AFN, now here it is AGN. So AGN is my item category for quotation level. Now let's see incompletion log. So incompletion log.
So system is saying that all this information is missing and we have to maintain it. So let's select one by one and we will maintain one by one all the fields. So first is quotation valid to. Select this line, go to complete data. Now, if you remember in quotation, we talked about your valid from and valid to date. So usually when we are sending quotation to any customer, it will have a validity date. It is not for infinite time because we want to push customer to close order in that time frame. And the specific pricing and terms and condition what we have offered, those are all duration specific. तो जैसे हमने इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी डेट जो हमने दी है, लेट्स से वी हैव केप्ट इट फॉर 1 वीक. सो कोटेशन इज वैलिड टिल 5th of October. Now, okay, so I have maintained quotation validity date. Now let's see what is the next incomplete item. Next is my terms of payment. So this terms of payment will be created in system by your FI team, and then sales people will be using from the available list. Let's say we have agreed for payment term 0004, which is immediately due. So as soon as we deliver it, we will collect this from customer. The customer has to pay. So that is the terms of payment. What can be other terms of payment? That other terms of payment can be, let's say, a 10% now at the time of order booking, at the time of sending goods or receiving goods, another 50% after 1 month remaining. So any payment terms which business to business it will differ, and that can be there, can be will be set up in the system. Now, okay, next item, let's see what is the next missing item. Okay, net value, pricing. Okay, now all are related to pricing. Now let's go to this select first line and go to this field conditions, and here enter PR00. PR00 is my sales price. When we cover pricing, that time I will go in more detail. So PR00 is my selling price of this item. So let's say I am selling this television for 1000 euros. So I will enter that selling price here, 1000 euros. And PR00 is your selling price. Then MWST is your tax. SKTO, there are some discount pricing also. So for now, you just try to understand that these are all different pricings here in